Hello aspirants, welcome you all to Agrick and we are doing most probable questions based on PYQ series for AFO mains. बहुत time है अभी and we have ample time for revision, so we are just moving on to that. 5 expected MCQs from 1 PYQ. So let us start. If you are new here, then do subscribe to our channel and also drop your feedback in the comment section. It will be very nice for us. Okay. First question, it has been asked in AFO Mains 2021. Question is, the principle of this technique is generation of nitrogen cycle by maintaining higher CN ratio through stimulating heterotrophic microbial growth, which assimilates the nitrogenous waste that can be exploited by cultured species as a feed. Which of the following is that? So एक बहुत बड़ी डेफिनेशन दी हुई है, बट अगर आपने फार्मिंग फिश फार्मिंग अच्छे से पढ़ा हुआ है देन यू वुड बी एबल टू आंसर दैट. Is it biofloc fish farming, integrated fish farming, composite, marina or inland fish farming? The right answer for this question is biofloc fish farming. Next is, this system combines aquaculture with hydroponics where fish waste serves as a nutrient input for plants, promoting the water reuse. So aquaculture with hydroponics. व्हाट इज इट? एक्वाकल्चर मतलब फिशरीज का कल्टीवेशन के साथ उसी वाटर को यूज करके प्लांट ग्रो करना. बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी, केज कल्चर, एक्वापोनिक्स, कंपोजिट कल्चर और मैरीकल्चर. इट इज एक्वापोनिक्स. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन दिस मेथड different compatible fish species with different feeding habits are cultured in same pond to utilize all ecological niches. The right answer here is composite fish farming, option number B. Next question is, which technique involves culturing the fish inside floating net enclosures in open water bodies like lakes and reservoirs? So कौन से टेक्निक में हम फिश को कल्चर करते हैं इनसाइड फ्लोटिंग नेट एनक्लोजर्स, यानी कि वो नेट रहते हैं उनमें फ्लोट करते हैं और ओपन वाटर बॉडीज है जैसे लेक हो गया, रिजर्वर्स हो गया. केज कल्चर, बायोफ्लॉक, एक्वापोनिक्स, टैंक कल्चर, हैचरी रियरिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग इज दैट? Right answer is cage culture. Next is, this technique allows integration of crops, livestock and aquaculture on the same farm, enhancing the resource utilization and farm income. So integration of crops, livestock and aquaculture, जहाँ पे crops भी है, livestock भी है, aquaculture भी है on the same farm. That means it is clearly indicating integrated farming system, right? सारे इंटीग्रेटेड हैं, दैट्स व्हाई इट्स इंटीग्रेटेड, सेम फार्म में है. सो ऑफ कोर्स ऑल द कंपोनेंट्स विल बी इन रिलेशन विथ ईच अदर, दे विल बी शेयरिंग कंपोनेंट्स विथ ईच अदर. देन विच फिश इज बेस्ट सूटेड फॉर बायोफ्लॉक फार्मिंग? जो फर्स्ट में हमने पढ़ा बायोफ्लॉक फार्मिंग, ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू यूटिलाइज माइक्रोबियल प्रोटीन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट? सो मागूर इज द राइट आंसर. मागूर जो होता है कैटफिश इज द वन ऑफ द बेस्ट एंड पॉपुलर चॉइसेस फॉर biofloc farming because of its ability to utilize the microbial protein. Okay. Next is, what is the optimal CN ratio maintained in biofloc technology to promote microbial flock development? CN ratio optimal कितना maintain करना पड़ता है? तो the basic range is 10:1 से लेके 20:1. इसी रेंज में होना पड़ता है, बट यहाँ पे तो ऑप्शन में सारे हैं, 10 भी है, 20 है. सो वी विल गो विद द एवरेज, दैट इज 15:1 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट. हालांकि अगर आपको कहीं 10:1 दिखे तो आप उसको भी कर सकते हैं, 20:1 दिखे उसको भी कर सकते हैं. ओके, बिकॉज ये इस रेंज में होता है. इस रेंज में सीएन रेशियो मेंटेन करना इसके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है. नाउ दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी. ये मैं फिश फार्मिंग के बारे में आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ, राइट. फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी. Just excuse me for the background noises if there is any, I hope not. First is on the basis of salinity. Freshwater farming of aquatic animals and plants in zero saline water. Next is brackish water farming, mixture of sea water and fresh water with a salinity less than 30 ppt. So salinity जहां पर less than 30 ppt होगा, that is brackish water. Like estuaries, backwaters, creeks, mangrove waterways, these are brackish in nature. Next is marine water farming. Marine farming of aquatic animals in sea water is marine water farming, or called as mariculture, right? Now on the basis of intensity, extensive fish farming, semi-intensive fish farming. So extensive is for large ponds ranging from 1 to 5 hectares in area, right?
and stocking intensity is more than 0.5 pieces per square meter of fish and more than 5 pieces of per square meter of shrimp. Okay, harvest is 500 to 2000 kgs per hectare. Semi intensive is from half to 1 hectare in area. Okay, and then there is intensive fish farming. Intensive is well managed form of fish farming, achieve maximum production for fish from a minimum quantity of water. It involves small ponds, tanks, raceways with a high stocking density of 10 to 50 fish per meter cube of water. Next is on the basis of enclosure used for culture. पॉन्ड कल्चर, केज कल्चर. पॉन्ड कल्चर इज वेरी कॉमन मेथड जहाँ पे इनक्लोज्ड एरिया में आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन से डाइक बंड बना के पॉन्ड बना के कल्चर किया जाता है. केज कल्चर जो हमने क्वेश्चन के थ्रू पढ़ा, it is rearing of fish from juvenile stage to commercial size, enclosed on all sides. It is suitable for water areas that cannot be drained. So open areas में जो होते हैं reservoirs, lakes में नेट के अंदर में डाल के नेट बेसिकली नेट से इनक्लोज करके हम फिश को फार्म करते हैं. Next is pen culture. Pen culture is defined as raising of fish in a volume of water enclosed on all sides except the bottom. Except bottom, bottom खुला रहता है, बाकी चारों साइड उसका क्लोज रहता है. It can be considered a hybrid between pond culture and cage culture. Then there is race culture जहाँ पे running water होती है. Raceways जैसे रेस ऐसे बनाए रहते हैं, रेस कोर्स उस तरह से फिश के बनाए रहते हैं रेसवेज. Flow through system होता है and enable rearing of much denser population of fishes. Then there is recirculating aquaculture system also called as RAS. So it is defined as aquaculture system that incorporates treatment and reuse within less than 10% of total water volume replaced per day. So इसमें recirculate किया जाता है मतलब replace किया जाता है 10% of the total volume every day, right? Next question is milk fever is caused due to deficiency of. This was again asked in 2021. So milk fever we know that deficiency of calcium की वजह से होता है. Next is grass tetany in cattle is due to deficiency of which of the following mineral? It is due to magnesium. Next is pica in animals, that is the bone chewing behavior is the deficiency of which of the following mineral? It's phosphorus. Okay, it's related to bones, so it's phosphorus, option number B. Next is swayback disease in lambs, that is young sheep, is due to deficiency of which mineral? It is copper. Next question is also ये PYQ है 2021 का from poultry. Which of the following housing system is used in commercial layer farming cage system in poultry having dimensions 14 to 16 inches or 17 inches? It is battery method. ठीक है, इसमें क्या होता है कि 14 to 16 इंचेस या 17 इंचेस के डायमेंशंस के केजेस में कमर्शियल लेयर्स की फार्मिंग की जाती है. नेक्स्ट इज विच सिस्टम ऑफ पोल्ट्री रियरिंग इज मोस्ट सूटेबल फॉर बैकयार्ड फार्मिंग. बैकयार्ड फार्मिंग के लिए कौन सा सूटेबल है सबसे ज्यादा है? इट्स द फोल्ड सिस्टम. आगे हम इसके एक्सप्लेनेशंस भी देखेंगे. नेक्स्ट इज इन डीप लिटर सिस्टम द लिटर मटेरियल डेप्थ शुड बी मेंटेन्ड एट अप्रोक्सीमेटली व्हाट 10 to 12. Next is which system of poultry housing offers the best control over feed inefficiency and space utilization. Best control कौन सा देता है against feed efficiency and space utilization? It is cage system. Which poultry breed is best known for dual purpose eggs as well as meat? It is Rhode Island Red. Next is in brooding. Ideal brooding temperature क्या होती है during first week for chicks? It's right from 32 से 35. Next, broadly poultry housing system are classified into three system. एक free range, एक semi intensive, एक intensive. जिसमें intensive में आ जाते हैं next चार: deep litter, slatted floor, slat cum litter and cage system. And based on the type of bird reared, brooder, grower, layer and breeder cages. ये सारे होते हैं, right?
सो इन्हें हम आज की क्लास के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम इसी से शुरू करेंगे, पोल्ट्री के हाउसिंग सिस्टम अलॉन्ग विद डायग्राम्स एंड ऑल. आई विल एक्सप्लेन इट टू यू ऑल. ओके, टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड comment down which topic you want to get MCQs for next. Okay, and I will cater to your needs. Thank you.